Good afternoon, everyone. In the previous class, we talked about this forces and how to break down forces. And we are talking about bodies at rest. And in bodies at rest, we talked about the contact forces and non-contact forces. Now, we are going to talk a little more about tension today. First, so talk about tension forces. We'll first take a rope. If you take a rope, and we're going to take a simple rope, massless rope that we usually take, and a simple massless rope. Massless means the mass is negligible. The rope is massless. Okay. Massless rope means mass is negligible. Compared to the other components of the system. So if you take a massless rope and let us say you started pulling this, you fixed this end. This end was fixed. Maybe stick it to some surface and just fix it. And this surface you are pulling with a force of F. So when you draw the free body diagram of this rope, of course, because you applied a force of F, then the surface on which this rope is sticking, that will also apply a force of, let us call it a normal reaction force. It's not a normal reaction force, but that force F dash, call it F dash, that the surface is applying on the rope is F dash. And for this rope to stay in equilibrium, that F dash will be equal to F. Now, none of the forces is tension forces. This F is an external force. This F is an external force. And if this F dash was applied by surface on rope, it is not tension. They both are not tension. Applied by surface on rope. So tension is something which develops inside the rope. Tension develops inside the rope. Means if we have to analyze what is happening inside the rope, to do that, I'll make a cross section of here. If you make a cross section here and then draw the FBD of these two portions, for this portion here, for this portion here, so I'll draw the FBD. This is this part, and the other part is here. So the original forces, the external forces, that were F dash here and F here. So this F here is balanced by some force, which was occurring inside the rope. So it has to be balanced by some force that is inside the rope. That is called tension. And same goes for this part. The force inside the rope, there must be something, call it T. Now, why does tension occur? Because here, if I call this surface as this, if I zoom in the surface, it will look something like this. And all this surface are made of atoms. And atoms have intermolecular force between them. If atoms have intermolecular force between them,
When you try to separate them, the atoms will resist. The atoms will resist because there are bonds between them. So when you're applying force on the end, this surface will not let go this surface. So this surface here will apply a force on this surface. Let us say the net force is T. Although the force by individual particles, that will be quite complicated to calculate. But the result of that is force applied by this surface on this surface is T. Same as here, the force applied by this surface on this surface is again only T. So tension is developed because of the external force. Tension is developed because of the external force. And it was not already there. It just developed because of the extension, because of the force you applied externally. So this is how tension is developed in the rope. And we'll also talk about a spring force. So spring force, we'll take a spring, and let us say the spring is attached to a surface. The spring is attached to a surface and it is relaxing. Relaxing means it is neither pulled nor pushed. It is just at its free state, and the length of this spring at the free state is called its natural length. So this length, when no force is applied at its end, this length, we call it L naught. L naught is called the natural length. L naught is called natural length. But if I start applying force on this, if I start applying force at this end, so of course the spring will have an extension. So now the spring will be longer than its natural length. Let me call this new length as L. So L naught is natural length, but after you applied a force F here, external force F here, this L became its extended length. L is called extended length. And the extra length by which the spring extended is called the extension. So X is called, which is equal to L minus L naught. X is called extension. So extension is caused because of the external force. Extension is called because of the external force. But F is not the spring force. F is just the external force. F is just the external force. So where is spring force? Actually, when you're pulling this spring, when you're pulling this spring, you're separating this spring. Means you're making an effort for the spring atoms in this spring to separate. And when you do that, there will be an internal force in this spring. There will be an internal force in this spring. So to balance out this external force, the spring gives out an internal force. There is an internal force in this spring. This is called the spring force. Because of the external force, there is an internal force in the spring, and that force is called the spring force. Of course, this external force is equal to the spring force. External force is equal to spring force.
And it was found that the spring force is directly proportional to the extension of the spring. So spring force is directly proportional to the extension of the spring. Extension of the spring. And of course, when you're extending in the right direction, then spring force will be towards the left direction. So there is a negative sign here. This negative sign is very important. So spring force is proportional to the negative of displacement of the end point, and this is replaced by a constant, a proportionality constant, and this proportionality constant is called the spring constant. So the spring force is opposite to the extension, opposite in the direction where force was applied for extension, and this spring force was a response to the external force. Spring force was a response to the external force. So this is the natural state. This is the state in which spring was stretched. And we can also have the case in which the spring was compressed. So the mathematics is very similar. When you compress the spring, you're basically applying force in the opposite direction. Instead of extension, there will be compression. So now you're applying force in the opposite direction. This F is the external force. External force is opposite direction. So the length is now less than L0. Here the length, let me call this as LE, that is the extended length, and this as the LC, that is the compressed length. LC is the compressed length. LC is the compressed length. So in this case, from the original length, the amount that is reduced is called the compression. The compression X. So the compression X, that will be equal to original length minus the original length L0 minus the compressed length, where it was the extended length minus the original length. So compression X is L0 minus LC. If you again want to write the spring force that is towards the left, you can again write spring force is proportional to the displacement. Magnitude is proportional to the displacement, and spring force is towards the left. The compression is towards the left. The compression is towards the left because you're compressing from this point to this point. The displacement is towards the left, and the spring force will be towards right. The spring force is towards right. So Fs is proportional to, again, negative of displacement, and we'll get the same relation. Fs is equal to minus kx. What is x here? X is displacement of the endpoint. That will be compression or extension. Anything. X is just displacement of the endpoint, the spring. Note this down. Have you noted this portion, the above portion, tension wala part? No, sir. Okay. So this was spring force, and before that, note down this tension wala part. Done, sir. Okay. Sir. Yeah. Sir, K की value क्या होगी? K depends on the spring. It's a property of the spring. Okay.
So I'll do some questions based on this. Think of it like this. Suppose there's a spring and the spring constant is given. Spring constant is a property of spring. It is defined for a spring. Suppose the spring constant is 100 Newton per meter. So you applied some force. You applied some force at this region, external force, and the extension, the value of the extension is 10 centimeter. Then find spring force and then find the value of external, value of F external. So कितना लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा spring force, and then also find the value of the F external. Pretty simple question. The second and third, you have to draw the free body diagram and then calculate the extension. और दूसरे वाले में compression होगा, find the compression. तीनों का FBD बनाना है. See, अगर सिर्फ magnitude की बात करें तो Fs is equal to minus kx लिख सकते हैं. माइनस से घबराना नहीं है, माइनस सिर्फ ये बताता है कि एक्सटेंशन के ऑपोजिट में फोर्स लगेगा स्प्रिंग पर. सो के 100 न्यूटन, बट यूनिट है मीटर में, इज 100 न्यूटन पर मीटर, और एक्सटेंशन 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दैट इज 0.1 मीटर. 100 into 0.1, that will be 10. So minus 10 न्यूटन. So spring force चाहे तो minus 10 न्यूटन बोल सकते हैं या 10 न्यूटन towards left बोल सकते हैं. So spring force will act towards the left direction. और जो external force है वो spring force के equal होगा, but negative में equal होगा. So you can write this as 10 न्यूटन. External force right में तो हमने positive लिखा है, that's the only thing. बाकी अगर डायरेक्शन पता है तो then positive negative का मतलब नहीं होता है. So if external is 10 Newton, if spring force is negative of 10 Newton, negative is क्योंकि left में लग रहा है, that's all. It's the only reason. या तो चाहे तो सिर्फ mod of Fs से भी काम चला सकते हैं. Understood? So extension हुआ right में, तो spring ने force लगाया left में. Extension का cause जो था वो external force था. External force की वजह से extension हुआ और extension की वजह से spring force आया, और spring force ने extension वाले force को balance out कर दिया. अगर spring force extension वाले force को balance out ना करे तो ये spring extend होता चला जाएगा, and that is what we do not observe. ठीक है. The second and third case, draw the FPD and then calculate the extension of the spring. और तीसरे वाले केस में compression होगा. Solve it and when done, just put it on the chart. Don't take more than 5 minutes. फटाफट FPD बनाना है दोनों का and then just solve the. Bharvi, your answer is correct. In these cases, take G is equal to 10 meter per second square. Unless until specified for all the questions in my class, just take G is equal to 10 meter per second square. सर गलती से सबको भेज दिया. Yeah, no issue. You made the free body diagram now. हाँ सर, बट अच्छे से हो नहीं रहा है.
like how to make a proper diagram. सी अभी 10 kg वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. सो 10 kg वाले का एफईडी बनाएंगे अगर. सो दिस इज द 10 kg ब्लॉक. तो 10 kg वाले ब्लॉक में एक जगह कांटेक्ट है और mg लग रहा है, तो mg नीचे के साइड लगेगा. दैट विल बी mg. इसकी वैल्यू 100 न्यूटन है, दैट वी कैन राइट. एंड ये जो पोर्शन है, ये एक रोप या फिर स्ट्रिंग कंसीडर कर सकते हैं. ये स्प्रिंग का पार्ट नहीं है, एक स्ट्रिंग है. तो ऊपर एक फोर्स लगेगा. लेट मी कॉल दिस फोर्स एज F. टेंशन भी बोल सकते हैं इसको. इफ यू वांट यू कैन कॉल इट टेंशन, बट आई एम जस्ट कॉलिंग इट F. ठीक है. अगर स्प्रिंग का एफईडी बनाया तो स्प्रिंग में, क्योंकि ब्लॉक स्प्रिंग ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा था F, तो ब्लॉक भी स्प्रिंग पे फोर्स लगाएगा F नीचे की तरफ. ठीक है. और यहाँ वाला जो पोर्शन है, दिस विल ट्राई टू प्रिवेंट द स्प्रिंग फ्रॉम मूविंग. सो स्प्रिंग नीचे जाना चाहता है बिकॉज दिस फोर्स इज डाउनवर्ड. सो एक दूसरा फोर्स आएगा ऊपर. लेट मी कॉल दिस F डैश. तो सब कुछ इक्विलिब्रियम में है. इक्विलिब्रियम में एक्सेलरेशन 0 है, तो फोर्स 0, नेट फोर्स बैलेंस्ड होंगे. सो F डैश इज इक्वल टू F एंड F इज इक्वल टू mg. तो यहां से F की वैल्यू आ गई mg. mg 100 न्यूटन है, F आ गया 100 न्यूटन और F डैश भी आ गया 100 न्यूटन. अच्छा, स्प्रिंग फोर्स इंटरनल होता है, बट उसकी वैल्यू इस वाले F के इक्वल होगी. स्प्रिंग फोर्स इसमें दिखा नहीं सकते एफबीडी में, बट वी नो कि स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे इंटरनल होगा. सो स्प्रिंग फोर्स जो होगा नेगेटिव ऑफ F हो जाएगा. ठीक है. सो नेगेटिव ऑफ F दैट इज माइनस 100 न्यूटन. Fx की वैल्यू लिख सकते हैं माइनस kx. Fs इज इक्वल टू माइनस kx. यहाँ से F इज इक्वल टू kx आ जाएगा. On comparing these two, F is equal to kx. और यहाँ से x को सॉल्व कर सकते हैं. That will be 0.1 मीटर. ठीक है. अभी सब कुछ मेथड से करना है. अगर मेथड से नहीं करेंगे तो बाद में कंफ्यूजन होगा, तो कॉम्प्लिकेटेड होंगी चीजें. सर. हाँ सर लेकिन इसमें एक्सटेंशन होगा ना? हाँ, इस केस में एक्सटेंशन होगा. तो फिर x की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए ना? x को नेगेटिव नहीं लिखते हैं. सी यहाँ पे जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात पे बात कर रहे हैं. एक्सटेंशन में नेगेटिव नहीं लिखते हैं, कंप्रेशन में नेगेटिव लिखते हैं. सर एंड F डैश और Fs सेम ही है ना? हाँ, F डैश भी. सी इस वाले पोर्शन पे स्प्रिंग फोर्स लगाएगा ऊपर, और इस वाले पोर्शन की बात करें तो स्प्रिंग फोर्स लगाएगा नीचे. तो F डैश भी Fs के इक्वल है. तो Fs जो है वो स्प्रिंग वाला फोर्स, वो स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स है वो है. तो उसको हम एफवीडी में यूजुअली रिप्रेजेंट नहीं करते, सिर्फ मैंने साइड में दिखाया हुआ है. एनी अदर क्वेश्चन? सर एक बार वापस एक्सप्लेन करो ना कि F डैश क्या है. सी ब्लॉक नीचे जाना चाहता है, तो ब्लॉक को स्टॉप करने के लिए ये वाला जो पोर्शन है रोप का, ये ऊपर फोर्स लगा रहा है F. दैट इज F. सो F की वैल्यू mg, दैट इज 100 न्यूटन. अभी ये पूरा स्प्रिंग को सेपरेट किया जब, तो इस वाले पोर्शन में F वाला फोर्स का रिएक्शन फोर्स नीचे के डायरेक्शन में लगेगा. इसका क्या मतलब है कि ब्लॉक इस वाले पोर्शन को नीचे ले जाना चाहता है. सो F नीचे के डायरेक्शन में लगा. एंड देन क्योंकि ब्लॉक स्प्रिंग को नीचे ले जाना चाहता है, या ये वाला फोर्स स्प्रिंग को नीचे ले जाना चाहता है, तो इधर वाला जो पार्ट है स्प्रिंग का, इधर वाला पार्ट, इट विल ट्राई टू स्टॉप इट. इट विल ट्राई टू स्टॉप इट बाय अप्लाइंग अ फोर्स F डैश. तो इस छोटे से पोर्शन में जो फोर्स लग रहा है, इसको यहाँ से क्रॉस सेक्शन कट किया, दैट फोर्स इज F डैश. तो ये दोनों ही स्प्रिंग के एक्सटर्नल में फोर्स है, स्प्रिंग के बाहर में फोर्स है.
जैसे इस केस में लिख लिया था हमने यहाँ पे, इसको जब कांटेक्ट हटाया था तो एक तो मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया था F, इसको बैलेंस आउट करने के लिए वॉल ने भी फोर्स लगाया, दैट वाज F डैश, वॉल ने भी फोर्स लगाया F डैश। तो यहाँ पे भाई वॉल के जस्ट नीचे जो रोप है उसका मैंने फोर्स लिख दिया F डैश। और हाँ, यहाँ से भी सेपरेट करें तो वॉल वाला फोर्स भी लिख सकते हैं F डैश। इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay. Any other question? Correct. हाँ. Any other questions? So students are getting different answers for this. Some are getting 12.5, some are getting 5 centimeter. Okay, let me draw the FFT free body diagram. So पहले 2 kg का FFT बनाते हैं. 2 kg का FFT draw किया. Let's complete this question first. So 2 kg वाला ब्लॉक नीचे जाना चाहेगा due to mg. So mg on 2 kg block will be acting downward. दो ब्लॉक्स है, I will write m1g. And ब्लॉक नीचे जाना चाहेगा तो स्प्रिंग ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा इस पे. So let me call that force as F. फिर स्प्रिंग पे फोर्स दिखाते हैं. तो ब्लॉक स्प्रिंग को कंप्रेस करना चाहेगा. ब्लॉक स्प्रिंग को कंप्रेस करना चाहेगा. सो ब्लॉक जो है स्प्रिंग पे नीचे फोर्स लगाएगा, दैट विल बी इक्वल टू F. ठीक है. और इसको बैलेंस करने के लिए ऑफ कोर्स 3 kg वाले ब्लॉक को स्प्रिंग पे फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर की डायरेक्शन. सो नीचे वाला ब्लॉक जो है स्प्रिंग पे फोर्स लगाएगा ऊपर के डायरेक्शन पे. लेट मी कॉल दिस एज F1. सो नीचे वाला ब्लॉक का एक्विटी बनाएंगे. सो 3 kg वाला ब्लॉक, लेट मी कॉल इट M2. सो दो जगह कांटेक्ट है, एक ऊपर एक नीचे, और mg नीचे लगेगा. सो m2g नीचे की डायरेक्शन में. देन ब्लॉक ने स्प्रिंग पे फोर्स लगाया ऊपर, तो स्प्रिंग ब्लॉक पे फोर्स लगाएगा नीचे. सो F1 विल बी डाउनवर्ड डायरेक्शन. और एक और कांटेक्ट फोर्स है, दैट विल बी ड्यू टू दिस सरफेस. तो सरफेस पे फोर्स लगेगा ऊपर. लेट मी कॉल दिस एज N, नॉर्मल फोर्स. सो इसके बाद तो सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ से आ जाएगा F इज इक्वल टू m1g, दैट इज 200 न्यूटन. F की वैल्यू 200 न्यूटन आ गई. यहाँ से F शुड बी इक्वल टू F1, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा. सो F1 की वैल्यू भी आ जाएगी 200 न्यूटन. 20 न्यूटन. हाँ, 20 न्यूटन. This will be 20 Newton. So F1 will also be 20 Newton, or normal force will be equal to F1 plus M2G. So this will be F1 is 20 and M2G will become 30. So normal force जो surface लगा रहा है block पे, that is 15 Newton. अच्छा, spring force के लिए कौन responsible है? F और F1. तो F1 इधर से लग रहा है तो spring compress होगा. कंप्रेस होगा तो स्प्रिंग के बाहर की तरफ फोर्स लगेगा Fs. दिस इज द स्प्रिंग फोर्स. तो Fs की मैग्नीट्यूड की बात करें तो दैट इज गेटिंग कंप्रेस्ड. सो माइनस k, और कंप्रेशन है तो माइनस एक्स्ट्रा है तो लिख सकते हैं. ठीक है. और इफ यू डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स, सिंपली बस मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से बात करना है. जस्ट राइट की मॉड ऑफ Fs इज इक्वल टू kx, और इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? दैट शुड बी इक्वल टू F के इक्वल होनी चाहिए, तभी बैलेंस आउट हो पाएगा. सो K दिया हुआ है 400,
or this is 20. So x will be 20 by 400, that is 1 by 20 meter, that will be equal to 5 centimeter. So far we got the right answer for this. Note this down, और एफबीडी बनाने में मेन फोकस होना चाहिए. एफबीडी करेक्ट बनाया तो उसके बाद न्यूटन्स लॉ का क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता. This is a massless pulley. Massless pulley कोई भी फ्रिक्शन नहीं देता और फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होती पुली की. And this is connected to a spring. This is attached to this part. Spring constant is given as 200 Newton per meter, 2000 Newton per meter. And here I have a block attached. This block has a mass of 4 kg, or let us give it 10 kg. So things you have to do: draw FPD. Draw FPD for the spring, for the block, for the pulley. Then calculate extension in spring. Calculate extension in spring. And then calculate force applied by this rod on pulley. Calculate force applied by this rod on pulley. तो उसके लिए pulley का FPD बनाना पड़ेगा. Calculate force applied by rod on pulley. Anyone got the extension in the first case? Sure, 1 by 20 meter. 1 by 20 seems correct. I'll draw the free body diagram and then I think the calculation will be easier once you have the FPD. So for the 10 kg block, it's pretty easy. Just make a block. एक ही जगह contact है, and M1G will be acting downward. That will be 100, and in the upward direction there will be tension. If I draw the FPD of the pulley, so pulley में ऊपर और sideways tension लग रहा है. So this rod will have to apply a force in this direction. Let me say कि rod ऊपर की direction में force लगा रहे हैं, reaction force in the y direction, और एक आगे के direction में force लगा रहे हैं, that is the reaction force again in next direction. And then spring का FPD. So spring के एक side तो tension लग रहा है, दूसरे side technical कोई force लग रहा है F dash, that is applied by the wall. So यहाँ से tension की value आ जाएगी mg. M1 is only m is there, so mg, m is 10, that will be 100 Newton. So here Rx will be equal to T, that will be equal to 100 Newton, and Ry will be equal to T, that will be equal to 100 Newton. अच्छा, Rx and Ry perpendicular है, and they are the forces applied by rod on the pulley. Force applied by rod on the pulley.
So net reaction force या rod का force will be root over rx square plus ry square. That will be 100 root 2 Newton. And इधर टेंशन लग रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में, इधर फोर्स लग रहा है राइट डायरेक्शन में. स्प्रिंग फोर्स will be equal to, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा स्प्रिंग फोर्स का, that will be equal to k times x. So x will be equal to, so tension will be equal to mod of the spring force, that will be equal to kx. X will be, tension की value है 100 Newton, whole thing divided by k, that is 2000. So 1 by 20 meter, that is again 5 centimeter. So this is the process you have to go through before getting to the answer. अभी के लिए in the learning phase, in the classes, you have to make the free body diagram हमेशा. Because in exam क्या होता है, अभी direct करने का try करते हैं exam में, and we miss a small point out, जिसकी वजह से पूरा answer गलत हो जाता है. So for now, for practicing your book, for practicing questions, अभी के लिए सिर्फ हमेशा FBD बनाना है, डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना कभी भी, इंट्यूशन पे नहीं जाना है अभी. बाद में जब इसके रिगार्डिंग इंट्यूशन डेवलप हो जाए, so maybe after 2 or 3 months you can try doing it directly, but अभी के लिए every time you have to draw the free body diagram. और न्यूटन्स लॉ का क्वेश्चन है, FBD नहीं बनाया तो क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले गलत हो जाते. That's what the general saying is. ठीक है, ये हो जाए, then do the second one. इसमें 2 रोप है तो दोनों के लिए अलग अलग टेंशन आएगा. जैसे रोप चेंज होगा तो टेंशन चेंज हो जाता है, सेम रोप में टेंशन सेम रहेगा, बट रोप चेंज होने में टेंशन चेंज हो जाएगा. Solve this. First, I'll draw the FBD of the 30 kg block. There is one contact force, and of course only one non-contact force, M1G, balanced by, let me call the tension in this rope as T1. But this is M2, so that T1 is equal to M2G. Let's go T2 बोल देते हैं. Let me call this tension here is T2. Okay, if I draw the FBD of this 10 kg block, so एक non-contact force M1G, and यहाँ पे T2 नीचे लगेगा. And if I call the tension in this rope as T1, so T1 will be in the upward direction. And then for the pulley, here it is T1, here it is T1. Reaction force in y direction is R by, reaction force in x direction is Rx. And free body diagram of the spring. तो इधर लग रहा है टेंशन T1 और इधर वॉल लगाएगा स्प्रिंग फोर्स, लेट मी कॉल दिस एज F dash. So यहाँ से कैलकुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं. T2 is equal to M2G. So the value will be, M2 is 330, so 300 Newton. Barbie and Nirmita are giving me the answer. And okay, other students try to solve this now, get the answer and tell me. Don't just sit idle. T1 की वैल्यू हो जाएगी M1G, that will be 100, and T2 की वैल्यू है 300, तो T1 टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 400 न्यूटन. सो यहाँ से Rx Ry कैलकुलेट कर लेंगे, रिएक्शन फोर्स आ जाएगा 400 √2, क्योंकि 45 डिग्री दोनों इक्वल है इसीलिए 400 √2 आ रहे हैं. एंड स्प्रिंग फोर्स यहाँ से बैलेंस करें तो T1 is equal to F dash, स्प्रिंग फोर्स will be equal to K times the X. The extension आ जाएगा, spring force will be equal to T1. T1 is 400 divided by 2000.
So SI unit में, so this will be 1 by 5 meter, that will be 20 centimeter. So extension हो जाएगा 20 centimeter. Like that, you can solve. So after this, we are going to apply vector concepts of vector in forces. So suppose forces का डायरेक्शन दिया हुआ है, जैसे पॉइंट है जिसमें हम कई सारे फोर्सेस लगा रहे हैं. Force F1 in this direction, F2 in this direction, and F3 in this direction. Or we're talking about equilibrium. Equilibrium is forces सारे direction में 0. So equilibrium is net force is 0. Net force is 0 का मतलब हो गया x direction में force 0 है. Then y direction में force, this implies that अगर equilibrium है तो net force 0 है, that means x direction में सारे forces 0 है, y direction में सारे forces का sum 0 हो जाएगा, and z direction में सारे forces का sum 0 हो जाएगा. Individual forces 0 नहीं है, but सारे forces का sum 0 है. So इस case में suppose F1 is given to you as 100 Newton, F2 is given to you as 200 Newton, and you have to calculate F3. So एक simple सा vector concept है that you can apply here. So let me say कि F3 find out करना है, so I can write this angle as theta. तो F3 के दो component ले लिए, तो यहाँ से F3 cos theta आ जाएगा, यहाँ से F3 इसका component आ जाएगा F3 sin theta. So F3 cos theta will be equal to 200 Newton, and F3 sin theta, this will be equal to 100 Newton, because दोनों direction में forces balanced है. ठीक है, अगर ये यूज करना चाहते हैं, सपोज समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि राइट डायरेक्शन में जो फोर्स है तो उसको पॉजिटिव लिख सकते हैं, माइनस लेफ्ट डायरेक्शन वाला फोर्स दैट इज F2 दैट इज इक्वल टू 0. अगर ऐसा लिखना चाहे तो, मेथड के अकॉर्डिंग लिखना चाहे तो, नहीं तो सिंपली हमारा लेफ्ट वाला फोर्स इज इक्वल टू राइट वाला फोर्स, दैट विल आल्सो वर्क. यहाँ पे F1 माइनस F3 sin थीटा दिस इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से F3 cos थीटा आ गया, F3 sin थीटा आ गया. सो इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली इक्वेशन 1 का स्क्वायर किया, इक्वेशन 2 का स्क्वायर किया और दोनों को ऐड कर दिया ऑन देयर साइड्स. सो बेनिफिट क्या होता है, F3 स्क्वायर कॉमन आ जाता है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है. सो दिस विल बी F3 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस F3 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, दैट विल बी इक्वल टू 200 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर. यहाँ से F3 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा F3 इज इक्वल टू रूट ओवर 200 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, दैट विल बी 100 रूट 5 न्यूटन. और चाहे तो tan थीटा भी निकाल सकते हैं. tan थीटा निकालने के लिए we have to divide equation 2 by equation 1, because that will be F3 cos theta by F3 sin theta. So if we do this, we'll get F3 sin theta by F3 cos theta. That will be equal to 100 by 200 Newton. That will be half. तो ये क्या हो जाएगा, tan theta will be equal to half. So angle that can be calculated using calculator, you can just write theta is equal to tan inverse 1 by 2. Okay, I'm just doing an using an elaborative way. You can do it in short. Just try doing the calculation. So next question. Suppose अब यहाँ पे तो सिर्फ एक ही फोर्स है जो x और y एक्सिस के अलोंग नहीं था. कभी कभी ऐसा होता है कि दो फोर्सेस होते हैं जो x और y के अलोंग नहीं होते हैं, तो दोनों का कंपोनेंट लेना पड़ेगा. In that case, you have to take component of both the forces.
So let us do one more question. So let us say two forces have F1, F2. F1 is given as 10 root 3 Newton. And F2 is the one which is not known. और एक तीसरा force है F3. Value of F3 is 20 Newton. So F3 कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से ये फाइंड आउट करना है. And you have to also find F2. सेम मेथड सेम ट्रिक्स अप्लाई करते हैं. कंपोनेंट लेना है F3 का. यूजुअली हम x एंड y एक्सिस को हमारा अपना बेस मान के बाकी इस डायरेक्शन में फोर्सेस कैलकुलेट करते हैं. सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो ना. Aditi, did you get the answer? Kushakra, can you tell me the answer? So 1 minute. Okay. So we know F3, we know F1, we don't know F2 and theta. Do the calculation. If you do the calculation, you get F2 as 10 Newton. And the value of theta, that will be 30 degrees. So F1 is known and F2 and F3 are unknown. In this case, you have to find the value of F2 and F3. Do the same thing, take the components or angles theorem. So first we'll take the components. So here it will be F2 cos 60 and here it will be F2 sin 60. Then if you take the component of so and then here if you take the component, it will be F3 cos sin 30 and this will be F3 cos 30. So I'll get two equation. जो x direction वाले forces है वो y direction वाले forces से balance हो जाएंगे. No, sorry, x direction के net force will be 0. So F2 cos 60 plus F3 cos 30, that will be equal to 100. And F3 sin 60, this will be equal to F2 sin F3 sin 30 that is equal to F2 sin 60. So यहाँ से एक relation आ जाएगा. This is F3
equals to sin 30 is half, so f3 is equal to f2 root 3. तो मैं फिर f3 को यहाँ पुट कर सकते हैं. तो f2 cos 60 is half, f3 is f2 root 3, or cos 30 is root 3 by 2. That is 100. Or 3 by 2 plus 1 by 2, that is 2f2, so f2 will be 50 Newton. f2 is 50, so f3 will be 50 root 3. That will be the answer. Okay. See, ऐसे type of problems को करने के लिए there is a simpler technique, and we are going to use some mathematical tools that are known as sine law and cosine law. Sine law and cosine law. So it looks like this. अगर हमारे पास एक triangle है. सर वो नोट कर. हाँ. Note this and tell. नोट करते टाइम समझ के नोट करना है, सिर्फ कॉपी नहीं. Okay. So a simpler method to do this. So this thing is valid for any triangle. So if I have three sides of a triangle as A, B, C, and A के opposite जो angle है that is alpha, B के opposite जो angle है that is beta, and C के opposite जो angle है that is gamma. So we have this something called as sine law. Sine law says that sine alpha by A will be equal to sine beta by B, that will be equal to sine gamma by C. और हमारे केस के लिए जो यूजफुल होगा that will be of this form. उसको जस्ट रिवर्स कर दिया. So A by sine alpha, that is equal to B by sine beta, that is equal to C by sine gamma. And दूसरा होता है cosine law. This will be studying in mathematics later. Cosine law is simply like this. The third side square, C square is equal to A square plus B square minus 2AB, or AB के बीच का angle, that is gamma. So cos gamma. Similarly, A square can be written as B square plus C square minus 2BC, or B or C के बीच का angle, that is alpha. So cos alpha. And then B square is equal to A square plus C square minus A और C के बीच का angle, that is cos of beta. यहाँ पे A और B के बीच का angle है gamma, B और C के बीच का angle है alpha. So this will be alpha. So this is the sine law and cosine law. अब जब I'll give you time to write. Just let us understand this. जब भी तीन forces equilibrium में हो, जब भी तीन forces equilibrium में हो, so what you can do, you can make a closed triangle out of these three forces. Means तीन forces, let us say first is F1, second is F2, and third is F3. F1, F2, F3 तीन forces हो. F1, F2 के बीच का एंगल हो गया suppose alpha, F2, F3 के बीच का एंगल हो गया बीटा, and F1, F3 के बीच का एंगल हो गया गामा. So if F1, F2 and F3 are in equilibrium, तो अपना triangle law of addition लगा सकते हैं, that is F1 vector plus F2 vector plus F3 vector, they should be zero. They should be zero. And when we do this, we can make a triangle. तीनों का sum होके closed path बनना चाहिए, that is a triangle. So let me take this as F1. ये वाला force F1 हो जाए, ये वाला F2 हो जाए, और ये वाला F3 हो जाए. तो F1, F2 and F3 we can make closed triangle. और उसके बाद फिर अपना साइन लॉ कोसाइन लॉ लिख सकते हैं.
तो साइन लॉ जब हम लिखते हैं तो वी कॉल इट इन दिस केस एज लामीज थ्योरम। सेम ही चीज है, बस फिजिक्स में यूज कर रहे हैं तो लामीज थ्योरम बोल देते हैं। सो दैट विल बी F1. So F1 के opposite वाला angle, that is sine beta, that is equal to F2 by F2 के opposite वाला angle, that is sine gamma, is equal to F3, that is divided F3 divided by उसके opposite वाला angle, that is sine alpha. So this will be the Lami's theorem for this case. Only applicable for triangle और जब equilibrium में हो तभी। ठीक है। अच्छा, कोसाइन रूल तो हमारा वेक्टर का रिजल्ट ही दे देगा, है ना। सपोज F1 F2 से F3 का रिजल्टेंट निकालना है तो कोसाइन रूल अगर लिखे तो ये सिंपली आ जाएगा F3 इज इक्वल टू F3 का स्क्वायर इज इक्वल टू F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस 2 F1 F2 cos alpha. सो यहाँ से कुछ नया नहीं आ रहा, दिस इज जस्ट योर resultant of a vector. This is your resultant of the vector a square plus b square plus 2ab cos theta का पावर हाफ. So cosine rule से कुछ नया नहीं आता, but you can use it here. And then this is your Lami's theorem. इसको हम यूज कर सकते हैं बहुत ही इजीली अगर तीन फोर्सेस दिए हो तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए। दो फोर्सेस दिए हो, तीसरा अननोन हो या एंगल अननोन हो, we can easily figure out. अच्छा, note this down. So here you will use this relation F1 by angle opposite to this. This is 120, 120. So F1 by sine 120, that will be equal to F2 by sine 120. That will be equal to F3 by sine 120. This just means that F1 is equal to F2 is equal to F3. If all these forces are equal, then that means all the forces are equal to 30 Newton. So that's using Lami's theorem. So value of F1 and F2 are equal. I can write simply F1 by sine alpha is equal to F2 by sine beta. That is equal to F3 by sine 60. So since F1 F2 are equal, so alpha will be equal to beta. If alpha is equal to beta, then this both angles will become 360 minus 60, because total should be equal to 360. So both angles is 150 degree. And you can calculate it. F1 is equal to F2. That is 60. Okay. F3 is 60 by sine 60, that is root 3 by 2 into sine 150, that will be half. So this should come out to be as 20 root 3 Newton. Now, applying it to actual questions from Newton's law, questions can be arranged like this. Suppose there is a block. Let us say the mass is 8 kg and it is attached to a rope using two ropes. So three different ropes are there, not a single rope. These are three different ropes. So the tensions in all three will be different. So you can make an FPD, and let us suppose angles are given. Let us suppose this angle is
150 degree. And this angle is given as 120 degree. And tension here, take T1, T2, T3. Then T3 you can calculate by using this FBD of this. Draw FBD of this block. So downward force is mg, upward force is T3. So T3 is known, two angles are known. You have to find the value of T1 and T2. T1 and T2. T3 you are known, that is mg, that will be equal to 80. Find T1 and T2. So T1 will be 80 root 3 and T2 will be 160 Newton.